or a calm place. So you can turn your camera on. So just I'm inviting on the screen to Kashish ma'am. Please carry over. Good afternoon, everyone. As you already know, my name is Kashish Gupta. So I will be your trainer with Prashant sir and with Anita ma'am for this month. Okay. You're comfortable with, you can also open your camera. I can see the faces so that this session can be very interactive. Okay. Let's see the all faces now. We are observing some happy faces here, Yes. and thank you for considering the request. We need some more people. So who is coming on the camp? Go fast. We are already 7 minutes late. Okay, so Kashish, please catch up from the previous. So I can see the faces. Okay. So last time भी मैंने यही faces देखे थे. This is shows like how active you are in the classes. ठीक है? It's very good to come on the camera because we are HR people, right? We have to be do like that. We have to be confront. शर्माना नहीं है HR की फील्ड में, है ना? You have to be on camera. Okay? Try to be interactive. This session should be interactive. Okay? So in the last session, Anita ma'am take right. उसमें हमने रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन पढ़ा था, राइट? Yes, ma'am. सो आपको असाइनमेंट भी मिला था उसके बाद, एंड वन ऑफ द सम फ्यू स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्ट कि एक बार फॉर्मेट हम लोग समझ जाते हैं, तो एट लास्ट ऑफ द क्लास हम लोग एक बार फॉर्मेट में कर लेंगे. ओके एवरीवन, हिंदी इंग्लिश इज कंफर्टेबल विद यू और शैल आई ओनली स्पीक इन इंग्लिश? Yes, ma'am, comfortable. Thumbs up, yes or no? Yes, Comfortable? ma'am. Okay, okay, okay. So that's good. And any one of you जिन्हें English language से problem हो, so we can keep the session in bilingual mode. हिंदी एंड इंग्लिश हम दोनों का कैप्चर करेंगे. पानी सॉरी. हाँ आकाश, कल का रिक्वेस्ट आपका मुझे याद है. We will try to keep the session in Hindi too. Don't worry. Thank you, sir. Most welcome. English only. Okay, Durgashri. The mode and the language will be in bilingual. Don't worry for it. My screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So you can see the topic recruitment and talent acquisition. So the second topic we are gonna cover is the recruitment cycle. Anybody wants to speak about what exactly recruitment cycle is? Anyone? Yatharth? Ma'am, it's kind of process that a Okay. person goes through Okay. on the recruitment and recruitment. No problem. Very good. Nice try. Divya? Recruitment is hiring the candidate with different platform. Okay. What exactly life cycle means? If we talk about life cycle, what exactly it is? It's basically a steps. Okay. So how a life cycle starts with? Okay. A recruitment also have a life cycle. You know, I know some of you are very work professionals. Some are you very freshers, right? तो जब भी हम when we went to the interview, right? आपसे कोई भी इंटरव्यू पे जाते हो तो एग्जैक्टली आपसे पता है यही क्वेश्चन पुट अप होता है. एग्जैक्टली ओके एवरीबडी नोज रिक्रूटमेंट के एक रट्टाफिकेशन वाली स्टेटमेंट. यस, रिक्रूटमेंट मीन्स हायरिंग. ठीक है, हमने हायरिंग कर लिया बस हो गया. बट नॉट एग्जैक्टली योर आंसर शुड बी लाइक दैट. ठीक है, रिक्रूटमेंट हैव अ प्रोसेस, हैव अ प्रॉपर लाइफ साइकिल जो हम फॉलो करते हैं वाइल हैविंग अ रिक्रूटमेंट. ओके, एक अच्छी रिक्रूटमेंट तभी हो पाती है व्हेन यू फॉलो योर प्रॉपर स्टेप्स. ओके, तो हमने लास्ट क्लास में भी आपने देखा होगा मैम शो यू हाउ दिस फनल वर्क्स, हाउ बेसिकली स्टेप्स फॉलोज, राइट? लेट्स मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट स्लाइड.
not moving. Wait, I share my screen again. Okay. Meanwhile, that anyone from you has a background in HR? If you have an experience in HR domain, no matter what is the role and responsibilities are, any one of you? Okay. सारे के सारे सब लोग freshers हैं? Final year, third year, second year, first year, I think. Okay, that's good. In the meantime, कल का session कैसा था? As like, what is the key takeaways for you? That was very insightful, sir. Insightful. And key takeaways as like क्या आपको उससे सीखने को मिला and what are the learnings from there? So we learn about the recruitment and talent acquisition and what is the key difference between these. And किसी ने कल के सेशन को ब्रश अप किया एक बार वापस से? जो चीजें कवर की गई हैं उसको वापस से रिपीट किया, Yes, एक बार sir. रिवीजन किया? Okay, that's good. यथार्थ and आकाश. In the meantime, जब तक कि स्क्रीन शेयर हो रहा है and presentation is over our screen. जी सर. So मैं एक छोटा सा रीजन जानना चाहता हूँ why you guys are in HR field? क्यों है आप HR फील्ड में क्यों हैं? Go ahead, anyone can speak. देखो यहाँ अगर साइनेज शो करोगे तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला. सर मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एचआर के लिए. ओके, so you have an elder sibling जिन्होंने सजेस्ट किया है क्या HR फील्ड में जाए. वो सर ऑलरेडी एचआर में है. Okay, he is already into HR. जी सर. And what is the total experience he has? सर उन्होंने अभी लास्ट अगली साल ही ज्वाइन किया है मथुरा रिफाइनरी में. Okay, that's good. And anyone else? So, sir, actually, I'm If you want, then yeah, go ahead. So actually, sir, I'm having a hospitality background, so it's like very common for me. So like I have interest. I created an interest in this field, and that's how I have it. Okay, that's why you have a background of HR. You have a keen interest in HR too. Anyone else? कोई और आना चाहता है? Over the screen. All of you. Move the rest, right? Okay. Okay, so Kassis ma'am will take over from there. I'm really sorry for this inconvenience. I don't know what happened suddenly. Okay, so you can able to screen like now. आप देख पा रहे हो? Yes, ma'am. Okay, so this Yes, is the ma'am. objective of today's class is first we will do like understand the recruitment cycle. Okay, what are the key holders are there in recruitment cycle? Apart from that, we go into the stages, what exactly one by one stages we will go through. And after that, how recruitment impactful to our organization success. Okay, and last is the assignment. Okay, so what is the recruitment life cycle? I already told you, right? There always a cycle. When you build up a thing, it's a process. Basically, we will start from. It's all about how are the steps you are following up. So the recruitment life cycle is the series of steps from identifying a job vacancy to the onboarding of a new employee. Okay. So what are the recruitment key steps? In the last class with Anita ma'am, you got to know what are the steps you have to follow, right? कौन-कौन से steps आप follow करते हो? So anyone can tell me क्या कोई भी steps क्या-क्या steps हम follow करते हैं? Anyone? यथार्थ, आकाश? Like first we do the create awareness, Okay. which we are aware. Then creating job descriptions. Then after the hiring process, interview, then Okay. selection, and at last the hiring.
ओके, गुड ट्राई। व्हाट अबाउट आकाश, आप ट्राई करो, क्या क्या की स्टेप्स हो सकते हैं एक रिक्रूटमेंट में? एक, आप अगर किसी को आप हायर कर रहे हो एज अ जेन्युइन लाइक नॉर्मल विदाउट एनी नॉलेज, आप क्या एग्जैक्ट कर रहे हो कि अगर अगर कोई भी रिक्रूटर, कोई भी एक एचआर है, वो कुछ हायर कर रहे हैं जब एक कैंडिडेट, व्हाट आर द स्टेप्स दे शुड फॉलो अप? कौन कौन से स्टेप्स दे कैन डू? यू कैन ट्राई आकाश। Ma'am, identifying right candidate ओके, and screening the candidate and conducting interview and also writing a job description. ओके, Um, uh, rec- exactly recruitment process. Mm, yeah, this whole. that's really good, Subha. You mostly covers all the points, mainly the JD. Without any job description, you can't hire a candidate, right? It's very important part of it. Anybody else wants to try, or we can move forward? Okay. Ma'am, Yeah. Yes. the recruitment process starts by identifying the need for the Right. company. Then we create the job Okay. description. Then we source few candidates through online portals, job referrals, or from the college. Then we interview them. Then we check their ability and recruit them. After which onboarding process starts. That's totally great, ma'am. I am sorry if I didn't pronounce your name correct, but Mamantha, it's really great. I can see that you already guys know the steps, right? हम लोगों को steps पता है. Only the thing is हमें बस correct formation चाहिए उसकी. We know how to hire. चलो ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों को इतना तो पता चल गया कैसे हायर करना है. Okay, we move forward now. Okay, so you can see my screen. The first step is job requisition. Why these terms are very important to you? You know, you everybody knows that कि हाँ हमको ऐसे करना है. We have to prepare a JD. We have to sourcing candidates. But nobody knows the exact terms. What exact terms you have to use? Because when you switch into your career or when you are starting your career now, on the interview basis, people generally ask you about, okay, you are applying for the HR. Basically आप चाहे फ्रेशर हो, बट दे वांट दैट कि यू शुड नो दीज टाइप ऑफ टर्म्स. ओके, सो इफ समबडी वांट्स कि आपको लिखना है तो ये टर्म्स भी आप लिख लो. बाकी वी विल आल्सो शेयर दिस पीपीटी विद यू फॉर योर रेफरेंस, कि आपको एक ही फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे भी आपको यूज में हो जाए. ओके, तो फर्स्ट अ वेरी सिंपल स्टेप इज जॉब रिक्विजिशन. एज मेमंथा सेज कि फर्स्ट वी नीड टू सी हमारे में हायरिंग की जरूरत है कि नहीं है. इट इज नीडेड, क्या पोजीशंस, कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं या किनको हमें फिल करने की जरूरत है. तो फर्स्ट वेरी स्टेप फॉर एन एचआर इज ऑलवेज बी अ जॉब रिक्विजिशन. तो व्हेन वी टॉक नेक्स्ट टाइम से, जब भी मैं आप लोगों से लाइफ साइकिल पूछूं, तो फर्स्ट स्टेप सबके मुंह में यही होना चाहिए, जॉब रिक्विजिशन इज द फर्स्ट स्टेप. सो द फर्स्ट थिंग इज जॉब रिक्विजिशन. Okay, request to hire for a position. Okay, the second step is job analysis and description. When you get to know कि हमारे पास ये वाली पोजीशन के लिए खाली है, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके अंदर मैंने देखा है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जरूरत है, सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे को एक हायर करना है. तो आई गेट टू नो कि हाँ मेरे को ये पोजीशन फिल करनी है, राइट? तो अब उसके बारे में आई हैव टू प्रिपेयर अ जेडी कि उन हमारी कंपनीज की या हमारे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, what they need exactly, what are the requirements they have to be, कि उनके बारे में क्या चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दे नीड कि हमें 5 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए या हमें फ्रेशर चाहिए. सो दीज आर द नीड्स. एचआर शुड नो कि हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है. एंड एचआर इज नॉट ओनली अ वन पर्सन और वन की होल्डर कि जो अपने आप से डिसीजन ले ले कि नहीं हाँ ठीक है सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, ओके आई विल हायर दैट. नो, there always be a management, always be a higher team which will tell you guys कि हाँ मेरी वाली पोजीशन खाली है, मेरे को इसके लिए नीड है. ठीक है, उस चीज के लिए द फर्स्ट थिंग्स हैपन इज जॉब रिक्विजिशन फॉर्म एक क्रिएट करा जाता है. ठीक है, इन द फर्दर क्लासेस वी ऑल्सो टेल यू हाउ टू क्रिएट अ जॉब रिक्विजिशन फॉर्म. ओके, वी विल ऑल्सो गिव यू द असाइनमेंट एज वेल कि आप कैसे जॉब रिक्विजिशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो एंड हाउ इट इज विल बी हेल्पफुल टू यू. ठीक है, द फर्स्ट वेरी स्टेप इज जॉब रिक्विजिशन. यू आर प्रिपेयर्ड कि आपको पता चल गया आपकी कितनी जॉब फिलिंग है. देन आफ्टर दैट इज जॉब एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन. आफ्टर नोइंग दैट जॉब रिक्विजिशन के बारे में कि हाँ मेरे को ये पोजीशन चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पोजीशन,
Now you have to come to create a JD. Anybody can tell me, like, any one of you experience in HR? No, ma'am. Yes or no? I have No. experience. No, ma'am. Nobody's experienced? Okay. So JD is a very, very basic process when you start into looking for the candidate. JD plays a very important role. Okay, how many have you given the interviews? किसी ने इंटरव्यूज दिए यहाँ पे अभी तक? शुभा, Yes, ma'am. दिव्या, मेमंथा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. right? Rajesh, have you guys ma'am. went for any interviews? Okay, that's Yes. okay. You can see that जब आप interviews देते हो, you always get a JD from your HR. That you have to see that कि आपको ये key roles, applications, qualifications, ये सारे terms आपको देखने को मिलते हैं एक JD में. So you know it is how a very important thing, right? इससे एक कैंडिडेट को हायर करने के लिए, कैंडिडेट को एक कंपनी के बारे में बताने के लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग. डू यू एग्री विथ मी? Yes or no? Yes, ma'am. Rajesh, Manisha, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, right? ma'am. Yes, ma'am. Totally right. Yes, ma'am. So it's always important to have a job description. Okay. After in this class also, we will see how to create a JD and how it is important to play. Okay. After that, sourcing candidates. Okay, Akash. Have you understand how it is important, Akash? कि JD क्यों इतना important है? आपने कभी इंटरव्यू दिया है, आकाश? जी मैम. तो आपको एक कंपनी की तरफ से हमेशा एक JD मिलती होगी जिसमें आपको उसकी क्वालिफिकेशंस, आपका रोल क्या रहेगा एज अ कैंडिडेट, उसमें सब बताया जाता है. एम आई राइट? Yes. तो Yes, ma'am. इसलिए ही एक HR के लिए एक अच्छी JD बनाना बहुत जरूरी है. अगर आप उस JD में मेंशन ही नहीं कर पाओगे तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट कैंडिडेट. एम आई राइट? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So after that, it is sourcing candidates. Sourcing candidate basically means आपने JD अपलोड कर दी. कल मैम ने बताया था there are many portals, right? जैसे naukri.com है, Monster है, Shine है. There are many portals जहाँ आप अपनी JD अपलोड करते हो as a HR and where you find out the right candidate. Okay? तो अब for example, anybody know about ATS? ATS के बारे में आप लोग कोई जानता है? Tracking system. राइट, टोटली अग्री आकाश, वेरी गुड. और इसके अलावा किसी को पता है एटीएस एग्जैक्टली, एटीएस हाउ इट वर्क्स, एटीएस कैसे काम करता है? So it basically like once a candidate sends the resume, तो based on certain parameters, it observes कि वो JD के according या जो भी company की demand है उसके according वो parameters उस resume के candidates में है या नहीं. तो application tracking system actually recognizes those things. Totally agree with you, Kashish. That's totally correct. Exactly. I'll tell you once again. ATS पहले के टाइम पे ATS यूज नहीं करते हैं, बट हम आज की जनरेशन के HR हैं, तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली ATS क्या वर्क करता है. ठीक है? ATS क्या होता है, यू नो? अच्छा, टेल मी वन थिंग. अगर आपके पास, ठीक है, आपने एक पोस्ट डाली, फॉर एग्जाम्पल आकाश एक HR है, उसने एक पोस्ट डाली कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर की डिमांड है, मेरे को ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हायर करना है. ओके? देन जैसे ही वो पोस्ट उसने डाली है आकाश ने, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेज आ गए. क्या आकाश, अगर आपको टारगेट दिया गया है कि आपको एक हफ्ते के अंदर एक डेवलपर लाके देना है, तो इज इट पॉसिबल कि आप 1000 रिज्यूमेज में से देख पाओगे एक एक करके? No मैम. नहीं ना. एवरीवन, क्या आप लोग, अगर मैं आप लोगों को टास्क दूं कि हाँ मेरे पास कशिश 2 days ही है, कशिश आपको सारे रिज्यूमे मेरे को चाहिए, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट, तो इज इट पॉसिबल? No, ma'am. Not at all. Not at all, right? So there comes the ATS. एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली क्या काम करता है, जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप जेडी में अपने कीवर्ड्स यूज करते हो, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जेडी बनाना क्यों जरूरी है. हम आगे की क्लासेस में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम जेडी को जब हम अपलोड करते हैं, हाउ एग्जैक्टली एटीएस वर्क्स ऑन. ठीक है? तो हाउ एटीएस वर्क्स हम थोड़ा ब्रीफ में ही जानेंगे. ठीक है? ज्यादा वी विल नॉट गो थ्रू दैट. एटीएस में क्या होता है, जैसे ही आप उनका जेडी डालते हो, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमे होते हैं, जो आपने से कीवर्ड यूज करा है कि मेरे को 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए, तो जितने भी 1000 रिज्यूमेज में 5 years ऑफ एक्सपीरियंस लिखा है, वो सारे आपको रिज्यूमे छाट के दे देता है या सोर्सिंग करके दे देता है. डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि हाउ इट Yes, इज वर्क? तो इज Yes, इट ma'am. इजी कि आपको एक तरीके से Yes, ma'am. सो इजी फॉर यू टू फाइंड आउट दोस, आपको ना तो 1000 में से चेक करना पड़ा, बट यू गेट टू नो कि हाँ दिस आर द थिंग्स
जिसको मेरे को चाहिए, एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट कैंडिडेट. इट सेव्स योर टाइम्स, राइट? Yes, ma'am. Yes, So we ma'am. will also see. So Yes, the ma'am. third part is of this. You can see sourcing candidates, find potential job candidates. So here ATS comes. Okay. ये आगे पढ़ेंगे, but this is the process you have to follow, and these are the terms you should know. Okay. Akash, Kashish, Yatharth, Avinash, everyone, Rajesh. So these are the words. ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए. नेक्स्ट टाइम मेरे को चाहिए, मैं सबसे पूछने वाली हूँ. ठीक है, सबको Yes, ma'am. चाहिए. मेरे को अब ये नहीं चाहिए कि हाँ Okay. हम हायरिंग Yes, करते ma'am. हैं. मेरे को ये नहीं चाहिए, बोलेंगे नहीं मैम, जॉब Okay, रिक्विजिशन ma'am. इज द फर्स्ट स्टेप. ओके. Ma'am, what's the full form of ATS? सॉरी. What's the full form of ATS? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. ओके. Okay, okay, और ma'am. व्हाट यू कैन डू इवन कि आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आओगे, बाकी हम आगे पढ़ेंगे. बट एक सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है ना. आपके ऐसा भी तो हो सकता है आपको मैं कुछ गलत बता दिया Yes, ma'am. तो आप लोग एग्री कर लोगे. नहीं, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी. ओके. The fourth part is screening and shortlisting. That's what the comes in. जब आप ये सब चीजें कर लोगे, आपको एक shortlist करना है. You have to finalize the candidates. For example, हम वही example लेके चलेंगे. एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हम देख रहे थे. Then we have finalized ATS के थ्रू कि ये हमारे पास candidates हैं. Then we have to screen and shortlist them. Okay. Then second process is interviewing. Okay. एक्सेस कैंडिडेट्स टू इंटरव्यूज. आप इंटरव्यूज लोगे उनके, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस करोगे. आगे की क्लासेस में हम लाइव इंटरव्यूज भी लेंगे. ओके. तो यू कैन अंडरस्टैंड द मोर प्रोसेस. अभी दिस इज ओनली द आपको स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो होता है. तो वी गेट टू नो. पहले हमने जॉब रिक्विजिशन कर लिया है, ठीक है. जॉब रिक्विजिशन के बाद व्हाट वी हैव डन, बताओ. मैं आई विल नॉट शो यू द स्क्रीन. जॉब रिक्विजिशन के बाद हमने क्या किया, बताओ. Job analysis and description, ma'am. Very good, Rajesh. You are active now. Okay. So, job analysis. Okay. After that, job analysis. Sourcing Sourcing candidates. candidates. Sourcing candidates. Very good. Sourcing candidates. After that, Shortlisting. Shortlisting. very good, Yatharth. Even correct. Thank you so much. चलो ठीक है, समझ आ रहा है. Okay. We are in the right pace. Okay. So, after that, we are doing interview. ठीक है. Interview के बाद we normally do selections. आई विल नॉट गो कि मैं इनके अंदर डीप जाऊं, बिकॉज आगे ये स्टेप्स भी ना बहुत ब्रॉडली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. इट्स जस्ट अ फॉर्मेशन. जो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल क्या है राजेश, यथार्थ, तो नॉर्मल आंसर नहीं चाहिए, मेरे को डिफरेंस चाहिए पहले वालों में और अब वालों में. ठीक है. तो सिलेक्शन हो गया हमारा. देन यू ऑल डू इज ऑफर मैनेजमेंट. आप उनसे नेगोशिएट करोगे वॉट एवर द सैलरी इज, वॉट एवर द बजट ऑफ द कंपनी इज, एंड वॉट एवर द पर्क्स. ठीक है, आप उनसे नेगोशिएट करोगे. आफ्टर दैट इज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. ऑनबोर्डिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपको रिटेंशन रेट अपने कम करने हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो आप काफी सारे कैंडिडेट्स को देखते हो कि वो 2-2, 3-3 महीने बाद या 4-4 महीने बाद छोड़ जाते हैं. मेजरली कंपनीज में अगर ऐसा होता है तो आप देखोगे बिकॉज उनका एचआर की वजह से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता. दिस इज द मेन कॉज. या तो उनको ऑनबोर्डिंग के टाइम पे पता ही नहीं होता उनका रोल क्या है. तो दैट्स व्हाट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ एचआर, कि आप कम्युनिकेट करो उनसे. ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनके साथ दिखाओ. ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज जस्ट नॉट अबाउट कि वो हायरिंग हो रहे हैं. अब एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस भी कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन वन ऑफ माई एक्स कंपनीज आई सी कि एक एक्सपीरियंस होल्डर हायर हुए थे. ठीक है, उनको एज एक्सपीरियंस ट्रीट करा गया. अब फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन, अब फॉर एग्जाम्पल इट्स अ न्यू प्लेस फॉर मी, राइट? इवन आई एम एक्सपीरियंस विथ माई वर्क, बट इट्स अ न्यू प्लेस. ओके, इट्स अ न्यू एनवायरमेंट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेदर अ कैंडिडेट इज एक्सपीरियंस, चाहे वो प्रेशर है. तो एज अ एचआर आप लोगों का रोल रहता है कि उनको कंफर्ट कराना, उनकी कंपनीज की पॉलिसीज के बारे में उनको A to Z चीजें बताना. ओके, तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. That's why I told you. अभी यहाँ पर भी active participation is very must. Okay? Yes, ma'am. Yes. So, okay. Normal term. What are the key holders in HR? According to you, what exactly key holder is? क्या होते हैं की होल्डर्स? अगर HR के प्रोसेस के बारे में कौन कौन से लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हायरिंग के टाइम पे? राजेश, यथार्थ, एनी गेस? मनीषा? I'm the recruiter. ओके, चलो ठीक है, नाइस. और Screening jobs.
Screening, Sorry? ma'am. Screening, application screening. Okay. Chalo, we can include that. Okay. Anybody else? Akash? No, ma'am. Kashish? Okay, no issue. Wait, I'll take other names also. Ma'am, key holder means manager. Totally agree with you. He Totally. Key to the he point. is responsible for any other activities, I think. And other guys like Divya, Kiran, Priyanshi, Rashmi, Likita, Prem, Shalma. Guys, you are active? Yes or no? If Yes, you are in the Yes, session, sir. yeah. If you are conscious in the session, Sir. active in the session, just be respond. Yes, Just sir. respond. Yes, sir. Okay. Okay, yes, sir. yes. Yeah, I'm really sorry if I'm not able to take everybody's names, but active participation is very much because I'm only able to see the names 4 to 5 who are active participants. ठीक है, ऐसा कोई restriction नहीं है, आप लोग बोलो, it's very important, right? So who are the key holders in HR? Up to Divya, Salma. I Yeah. think if for the bigger companies शायद vendors भी हो सकते हैं. Right. Totally agree. Maybe member. Kiran. Maybe organization. Okay, organization is there. Okay. Supervisors, maybe. Supervisors. Totally agree with you. Supervisors. The referrals. Employees, ma'am. Sorry, Salma. The referrals. Employees, ma'am. Okay, employees. Ma'am. Okay, I'll take all the feedbacks. Okay, I'll take it. Then I'll let you know exactly what the key Client, holders ma'am. are. Clients. Okay. Ma'am, human resource planning. Human resource planning. Okay, I'll take all the feedbacks and get back to you. The referrals, the employee referrals. Ma'am, Okay. ma'am, manager who takes the responsibility. That's the main key holder. Managers, right? Like One I'm of it creating is policies. These are the managers. right. Totally agree with you, Yatharth. Okay. चलो, let's see किसके किसके आंसर्स सही होते हैं. ओके, बूम. किन किन के आंसर सही निकले? चलो, कोई नहीं. ओके, that's good. चलो, कोई नहीं. It's okay. The first thing is senior management. Okay. Key holders or stakeholders. ठीक है. Stakeholders basically means जो human beings are available. Organization है, obviously there's a part of it. एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी HR खुद से अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता, राइट? उसके ऊपर भी एक सीनियर मैनेजमेंट होगा जिससे उसको पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज द बजट ऑफ आवर कंपनी, व्हाट आर द बेसिकली थिंग्स वी हैव टू फॉलो. ठीक है, क्या क्या पर्क्स हम उनको देंगे, व्हाट आर द इंसेंटिव्स. So these are the things have to be followed. The first key holder of the HR department is senior management. Okay, provides inputs on the roles requirements and desires qualifications. Okay, इसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट के अंदर आपके टीम लीडर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, आपके पर्टिकुलर टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं. एग्जैक्टली वन ऑफ समबडी सेड क्लाइंट्स. रेस टोटली अग्री विद यू. क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, जैसे वो काफी सारे आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं जो बाहर से हायर करती हैं, तो क्लाइंट्स भी इट्स एन इंक्लूडेड ऑफ पार्ट ऑफ इट. ठीक है. देन सेकंड कम्स इनटू हायरिंग मैनेजर. जिन लोगों ने मैनेजर बोला था, वेरी गुड, यू आर वन स्टेप अहेड. ओके, सो हायरिंग मैनेजर इज बेसिकली टेल्स यू द बजट. ओके, अब आप जिस कंपनी में जॉब करोगे, यू आर नॉट डायरेक्टली आप मैनेजर की पोस्ट पे नहीं जाने वाले हो, जाओगे बट आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, सो एज अ फ्रेशर यू हैव टू टेक अ डिसीजन फ्रॉम योर हायरिंग मैनेजर, जो आपको अलाउंस देता है कि ये चीजें हमारी कंपनीज फॉलो करती है. दीज आर द थिंग्स. सो यू हैव टू बी कनेक्ट विद द हायरिंग मैनेजर. द थर्ड पार्ट इज HR रिक्रूटर, जो आप लोग होने वाले हो इन ऑफिस से. ठीक है, इसमें HR रिक्रूटर इट्स अ पार्ट ऑफ दिस. इंटर्न्स, जितने भी इंटर्न्स वगैरह हायर होंगे, जितने भी छोटे छोटे भी हायरिंग पोजीशन होगी ना, इवन द नीड्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस are the part of the key stakeholders. So according to you, HR organization, everybody's answers is correct. It can be a key holders,
बट जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे एक एचआर के अंदर देयर आर 4 थिंग्स. द फर्स्ट इज सीनियर मैनेजमेंट, द सेकंड Senior इज manager. हायरिंग मैनेजर, द थर्ड इज एचआर रिक्रूटर्स जो आप होने वाले हो फ्यूचर वाले, ठीक है. द फोर्थ इज इंटरव्यू पैनल्स. Interview panels are basically candidates. Some of these people also say candidates, right? Totally agree with you. Candidates also be a stakeholders because वो उस process में उस life cycle के अंदर वो part हुए हैं ना, तो इसलिए वो stakeholders कहलाएंगे. Okay? Have you agreed with me? Yes or no? सबको समझ आ रहा है what I'm trying to say right now? Yes, आकाश, ma'am. यथार्थ, Yes, अविनाश, ma'am. आदित्य. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So these are the stages we basically follow. Okay. So हमने पहले लाइफ साइकिल जान ली, अब उसके बीच में these are the stages जो हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल भी करेंगे साइड बाय साइड इन द फ्यूचर क्लासेस. द फर्स्ट थिंग इज जॉब एनालिसिस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली यू विल डू. यू विल आस्क योर लाइक फिल योर जॉब रिक्विजिशन फॉर्म, राइट? रिमेंबर एक्टिव. Yes, याद आया ma'am. कुछ हमने स्टार्टिंग Yes, में बोला ma'am. था? जॉब रिक्विजिशन, Yes, ma'am. देयर Yes, इज ma'am. काम. हम लोग जॉब रिक्विजिशन करना भी सीखेंगे, एग्जैक्टली हाउ वी विल बिल्ड अ जॉब रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है. उसके Yes, बाद द ma'am. थिंग इज सेकंड स्टेज इज जॉब डिस्क्रिप्शन राइटिंग. वी विल डू दैट आल्सो. जॉब पोस्टिंग, वी कैन आल्सो लाइक इन द फ्यूचर क्लासेस हम कैसे सीखेंगे कि एग्जैक्टली जॉब पोस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, ऑन द लिंक्डइन. आफ्टर दैट सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, सिलेक्शन एंड ऑफर. दीज आर द थिंग्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे विच विल मोर एनहांस यू. जो आप अगर आगे फ्यूचर में जब जॉब करोगे तो आप डेफिनेटली एक डिफरेंट पर्सन होंगे एक प्रेशर से. ओके. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली जॉब एनालिसिस इज? एनीवन? अब तो इतना पता पढ़ चुके हो, पता चल गया होगा. आकाश, राजेश, दिव्या, यथार्थ. Ma'am. Ma'am, it's जी मैम. व्हाट एग्जैक्टली जॉब एनालिसिस इज? क्या है जॉब एनालिसिस? मैम जॉब एनालिसिस मतलब कि कंपनी में कहाँ जगह खाली है उसके लिए हम अपने ट्राई करो. जो मैनेजर्स हैं उन लोगों से पूछेंगे, वो हमें बताएंगे. हाँ जी. ओके. उसके राजेश, बाद दिव्या, या सॉरी आकाश, आई एम रियली सॉरी. हाँ, आप तो कंप्लीट करो प्लीज. Hello, जी ma'am. मैम. Can I speak? जस्ट वेट अ सेकंड शुभा, लेट्स आकाश कंप्लीट. Okay, okay. आकाश, यस मैम. आप कंप्लीट करो प्लीज. क्या कह रहे थे आप? तो मैम जो हमारी सीनियर मैनेजर है वो हमें बताएंगे, मतलब कंपनी में कहाँ जगह खाली है वो होती है मैम. उसके बाद फिर मैम कहते हैं जीडी, जॉब डिस्क्रिप्शन. ओके. ओके, टोटली अग्री विद यू. आ गया है, मेरे को पता चल गया, सबको समझ आ रहा है. ओके शुभा, यू वर सेइंग समथिंग? Yes, ma'am. Yeah. Actually, job analysis means collecting all the information related specific job, like Okay. requirement, roles. Right. That's okay, ma'am. Okay, totally agree with you. Anybody else wants to speak? yes, ma'am. Yes, So it's Yatharth. a over. description, ma'am. Okay, okay, Bhavna, Bhavna, I guess. Okay, Yatharth, complete first, then you can speak. So, Okay. so it's the overall analysis of the job Okay. description, what skills we require, and what things in a candidate we require on the basis of job experience and all of the things. Totally agree with you, Yatharth. Very well. Inquiry Yes. about job requirements. Okay. Bhavna, you can speak now. Kashish, Abhinash, Swati, Priyanshi, Manisha, Sonam. Ma'am, Okay. can I speak? Yes, you can. Ma'am, the process of analyzing the duties, task, and the responsibilities for the job. Okay. Okay. Totally agree. Everybody is correct. Now I get to know that everybody understanding everything. Okay. So these are the purposes to identify key responsibilities and tasks associated with the job. ठीक है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या टास्क हम लोगों को देने हैं. टू डिटरमाइन द की स्किल्स
क्वालिफिकेशंस हमें क्या क्या चाहिए, राइट? ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जॉब एनालिसिस का किसका फाउंडेशन है? जेडी का फाउंडेशन है। Always when you are creating a JD, it's always important to do a job analysis. Do you agree with me, everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So these are the term JD. So JD is a written document that outlines the duties, responsibilities, qualifications, and other key details of a specific job role. Okay. So JD is what? हमने simply पहले भी देख लिया है कि JD is a written document जहाँ पे आपकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस आप स्पेसिफिकली मेंशन करते हो कि आप एग्जैक्टली किस कैंडिडेट को हायर करना चाहते हो। Okay, I'll hide this slide and I'll ask you one by one or whichever you want to speak कि exactly JD is what, मतलब आपको क्या लगता है JD में क्या चीज फॉलो करनी चाहिए? आप जब ठीक है हमने सोच लिया कि हमें क्वालिफिकेशंस लिखनी है, की स्किल्स लिखनी है, जॉब के बारे में लिखना है, बट आपको पता है क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो अप करने पड़ते हैं जेडी से पहले? कैन एनीवन गेस? जेडी से पहले मतलब if you are preparing your JD, you know that कि you have to write a qualification, you have to mention the basically job description. So what are the key points you have to follow while writing a JD? It should be. Okay, भाई करो करो. You can go. You can do. So Role it's of the basically job, ma'am. Okay, role of the job. Okay. A vacant position. Okay, I understand. What I'm asking you, okay, you have everything, the vacant positions, you have the qualifications, right? आपको सब पता है कि exactly मेरे को क्या लिखना है, but लिखने से पहले आपको चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी ना कि exactly how we will present that format into JD, right? कि exactly what format you should follow. Anybody knows about that? some Ma'am, extreme. job title. Okay, job before a title. JD, Yes, you can please. as a role. So, what is the requirement? Like, what is the duties? What is the responsibility of a HR intern? And what is the qualification? And what is the exact role of this role of HR intern? So that's all the mention in a JD. Okay, totally agree with you. Totally agree with you. Next, Thank somebody you. wants to speak. It should be like we have to do a smart analysis. It should be the words, what we choose, and it should be in limit. Okay, that's a good point. It should be a limit. Yes. Anybody else? We consider the company vision. Okay, agree with you. Okay, we can see clear and specific job title. Okay, a first thing is जब भी आप किसी के लिए लिख रहे हो, it should not be a very lengthy, because आपने देखा है कई job description people are very, अगर आपको कोई job description दिया जाए 2 से 3 pages का, तो do you put efforts to read it until and unless आपको उस job की need नहीं है तो? No, ma'am. नहीं ना, No, ma'am. अगर आपको कोई जेडी पकड़ा दे, हाँ चलो ठीक है, यथार्थ ने क्या किया, मैंने 3 पेजेस की जेडी दे दी कैंडिडेट को, अब कैंडिडेट पढ़ेगा उसको? आई डोंट थिंक सो। अगर मैं उसकी प्लेस में होंगी तो आई विल नॉट रीड इट एट ऑल, राइट? It's a boring thing now, so It's no. boring thing because it's boring as well as you will not get to know exactly what company is asking for, right? कोई पेपर थोड़ी ना पढ़ने के लिए बोला है। So the thing is a clear and concise job title. जो भी आप ऊपर जॉब टाइटल दे रहे हो वो बहुत concise और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चाहिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चाहिए। इट्स नॉट अबाउट आवर लेंदी नेम ऑफ इट कि बेचारा बच्चा यही सोचता रह जाए किस लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जॉब टाइटल बहुत क्लियर हो, ठीक है? आपकी जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स पे मेंशन करी हो, जॉब समरी हो, उसके अंदर कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में बताया गया हो, रिक्वायरमेंट्स क्या है कंपनी की, और लोकेशन की व्हाट एग्जैक्टली लोकेशन इज लुकिंग फॉर। इसके अंदर आप उसके अंदर वर्क शेड्यूल भी डाल सकते हो कि एक रिमोट जॉब है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है या वर्क फ्रॉम होम है। ओके, so these are the points you have to follow while writing your document or writing your JD. Do you guys agree with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So this is the basic template I have shared with you. Okay, so you can see you have to write the job title. कंपनी का विजन के बारे में बताओगे आप लोग. द रोल, ओके, क्या रोल रहेगा, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब डिटेल्स, की स्किल्स और कैसे उनको अप्लाई करना है इस जॉब के बारे में, व्हाट आर द डेडलाइंस ऑफ दिस जॉब. यू कैन सी, आप देखो हर चीज अगर किसी को ये जेडी जा रही है, इट इज वेरी क्लियर एंड प्रॉपर. अ कैंडिडेट कैन वेल नोन कि हाँ उसको एग्जैक्टली क्या करना है, उसकी क्या ड्यूटीज रहेंगी. एम आई राइट, यस और नो? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. So Yes, this ma'am. is Yes. yes, this Ma'am. is your basically a homework is an assignment from my side. You guys have to prepare a JD. ठीक है, मैं आगे आपको रोल्स भी बता दूंगी किस किस रोल्स पे आप बना सकते हो. आप अपनी चॉइस का कोई भी एक रोल चूज कर सकते हो. ठीक है, Ma'am. के ऊपर you have to prepare. And our disclaimer is don't ever use to do ChatGPT AI tools in my class. ठीक है, I get Okay, to know, ma'am. मेरे को पता चल जाता है because I am a content Ma'am. writer. Ma'am, Yes. the JD is in MS Word या either PPT? MS Which Word. format? MS MS Word. Word. You have to prepare this on MS Word. Okay. 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 So you have to prepare an assignment on the JD. I will describe you the all the roles. ठीक है, आप उसमें से कोई भी एक चूज कर लेना. I really want कि आप अच्छा ट्राई करो. Don't use AI tools. पहले ही बता रही हूँ because live Yes, होगा ma'am. वो Okay, मैं ma'am. live check Okay, करूंगी ma'am. आपके सामने. Don't you Okay, dare to. ma'am. Okay. सब ओके ओके कर रहे, चैट जीपीटी वाला नहीं होना चाहिए. ठीक है. जी ma'am. Okay, let's move forward. So job posting, as we already discussed in yesterday class also, these are the job posting. It's detailed announcement created by an employer to advertise an open position within their organization. Simple, right? हम एक जॉब जब हमने जेडी तैयार कर ली, जब हमें पता है तो हमें जॉब पोस्ट भी करनी है. तो these are the portals. We have naukri.com, a famous like LinkedIn है, Indeed है, Glassdoor है. जो हम करेंगे बेसिकली लिंक्डइन पे करेंगे बिकॉज आगे प्रोफेशनल लाइफ में लिंक्डइन इज द मेन सोर्स जो जॉब पोस्टिंग के लिए यूज करा जाता है. तो फॉर दैट प्रैक्टिकल सेशन प्रशांत सर विल टीच यू लाइक हाउ टू यूज लिंक्डइन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. Okay. जी ma'am. Okay. Okay, Okay, ma'am. ma'am. So these are the remaining process. I will not take more time with this because we have to discuss case study as well. So हमने बेसिकली ये देख लिया है, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, सिलेक्शन, ऑफर. Can we move forward? Yes, Or ma'am. right now? Yes, Because I Yes, don't ma'am. want we should Yes, waste our ma'am. Yes, time. ma'am. We already know these things. Okay? Because I know मैंने इतना तो करा दिया, आप लोगों को वर्ड्स पता है. और नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी तो एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को. ओके. Okay, ma'am. सो Okay, ma'am. Okay, अब ma'am. आपने ये सारे फॉलो स्टेप्स कर लिए, एक प्रॉपर लाइक साइकिल फॉलो कर ली. तो हाउ योर रिक्रूटमेंट, अगर आप कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हो, एक अच्छा कैंडिडेट हायर कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में कैसे वो हेल्प करता है? टेल मी, व्हाट इज रिक्रूटमेंट्स रोल इन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस? To find potential candidates for job, ma'am. ओके. Right. To Identify identify goals for a right job, ma'am. ओके. To help achieve a goals. I'm placing a Totally right agree person with at you. right time at the right position. Totally agree with you. That person will bring in more, like he will be more active, right? So productivity will increase ultimately. So it will result in the organizational success as well. Exactly. This is the point I'm waiting for. Thank you so much. What's your name, by the way? Because I was not able Kashish. to. Kashish, Kashish. exactly. Okay, Kashish. Okay, me too. Okay, so the function I'm looking for, the productivity. That's what a major plays role in. The productivity increase, right? रिक्रूटमेंट हम क्यों करते हैं? ऑब्वियसली आप बेनिफिटरी, राइट? आप सब एक्सटर्नल चीजों को छोड़ दो. अगर मॉनेटरी बेसिस पे हमारे अगर हम हायरिंग कर रहे हैं, इट विल डेफिनेटली मॉनेटरी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी रिक्रूटमेंट की, राइट? ऑर्गेनाइजेशन की. इफ वी आर हायरिंग गुड कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज आवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी एज वेल एज मॉनेटरी टर्म्स पे भी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करेगा, राइट? हमें अपनी कंपनी को प्रॉफिट भी तो देना है. Am I right? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. So a Ma'am. basic, yes. You see this here, yes, ma'am. Okay. So basically, the main goal of organization success recruitment is monetary basis. Okay. Monetarily आप strong कर पा रहे हो अपने organization को. ठीक है, आपके retention rates बहुत कम होंगे.
अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी और न्यू इनोवेशन पे भी स्कोप करेगा। ऑब्वियसली ग्रोथ होगी अगर आपकी रिक्रूटमेंट अच्छी है, यू आर हायरिंग अ राइट कैंडिडेट, so it's definitely boost into organizational success. Okay, Yes. so these are Yes, the ma'am. only points that I've discussed. Recruitment as a strategic process. Okay, recruitment, it's not just about filling position, it's about finding the right fit that aligns with the company's goals and culture, right? Do you guys agree? Yes Yes, or no? ma'am. तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिक्रूटमेंट इज जस्ट नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान कि अभी हमने हायरिंग कर ली, कोई बात नहीं, बट हमें पोजीशन फिल करनी थी इसलिए हमने हायरिंग कर ली। इट्स नॉट अबाउट दैट। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बिकॉज आप हायरिंग कर रहे हो, ऐसे सोच के करोगे कैंडिडेट्स को कि वो हमारी पोजीशन को और लॉन्ग लास्टिंग अच्छे से कर पाए, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैन एनीबडी कैन रीड दिस फॉर मी? एनीवन? When you make the right hire, it not only drives organizational success, but also positively impacts employee satisfaction and growth. Do you guys agree with this statement? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? Ma'am, When yes, ma'am. yes. So when you make the right hire, सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को ही नहीं, एक एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। ओके, Yes. तो Yes. दिस इज लाइक वन ऑफ द कंपनीज लाइक प्रासा इन्फोकेप। मैंने वहां से आया टेक दिस ग्राफ। उन्होंने अपनी कंपनी का ग्राफ शो किया हुआ था इन विच दे हैव मेंशन कि when the recruitment quality is very high, the employee satisfaction is also very high. You can see, अगर रिक्रूटमेंट की क्वालिटी बहुत खराब है, जस्ट जल्दी से फिलअप कर दिया है, तो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वेरी लो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ? Yes. Yes. Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. अगर आपकी रिक्रूटमेंट, अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी की रिक्रूटमेंट करते हो, अच्छे कैंडिडेट्स हायर कर रहे हो, जो जॉब के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनको पता है एग्जैक्टली क्या रोल उनको करना है, तो उनका इमोशनल लेवल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ओके, Yes. Yes, ma'am. तो दीज आर द Yes, ma'am. की टेकअवेज फ्रॉम दिस क्लास। हमने सीखा क्या क्या स्टेजेस होती हैं, ठीक है, हु आर आवर स्टेक होल्डर्स, क्या क्या स्टेजेस पे हम बेसिकली काम करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, जेडी करते हैं। वी ऑल्सो फोकस ऑन कि एग्जैक्टली जेडी का क्या फॉर्मेट फॉलो होता है। एट लास्ट इन द क्लास वी फोकस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑन सक्सेस, कि हाउ एग्जैक्टली आप देख रहे हो प्रैक्टिकली भी चीजें पॉसिबल है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस रिक्रूटमेंट आजकल की, जैसे कि अगर किसी प्रेशर से पूछोगे ना, हाँ एचआर एक पोजीशन फिल करनी है वो हायर करते हैं, बट नॉट एट ऑल। मे बी अब तक जहां पर है आपकी पोजीशन और लेवल भी चेंज होगा माइंडसेट देखने का, कि ऑर्गेनाइजेशन एक एचआर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉय की लाइफ भी चेंज करता है, Yes. राइट? टोटली Yes, अग्री विथ ma'am. मी? Yes. यस और नो? Ma'am. So this is the assignment I was talking about. ठीक है, आप इनमें से 5 मैंने जॉब रोल्स दिए हैं आप लोगों को। इन 5 में से कोई भी आप एक 1 सेलेक्ट करोगे, उसकी एक प्रॉपर जेडी क्रिएट करके कल लाओगे। तो कल हम लोग लाइव चेक करेंगे। पॉसिबल करना कि आज आप सेंड कर दो, नहीं तो कल मॉर्निंग तक क्लास से पहले सेंड कर दो, तो मैं सबके आप लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार ओवरव्यू कर लूँ, ठीक है? हम Yes. सेंड कहाँ पे करना है? यू कैन शेयर इन द ग्रुप। ग्रुप itself. Okay, you can share in the group and don't use AI. Yeah, sure. Yeah. So all class goes to Prashant sir. He will share you the case study. Case studies are also very important discussion. You should know exactly how live things are going on. Okay. Thank you so much, guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, Thank you ma'am. very much. You're most welcome. Okay, so can we stop the screen sharing? Yeah, so it's time for quick discussion. Some of and all the other things, like we are going to discuss the case studies too. Our main topic is like what is the role of recruitment into organizational success. ये लास्ट में एक बहुत बड़ा टैगलाइन था जो आप सारे लोगों के लिए, मे बी दिस टास्क इज और मे बी दिस टैगलाइन इज सो मच इम्पोर्टेंट टू यू। अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, एक एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड बाकी सारे अदर पर्सपेक्टिव से इफ यू वांट टू गो फॉर चेक ऑल दिस लाइन। एंड वन थिंग मोर, we are going to discuss the case study
बहुत फेमस केस स्टडी है, मस्ट हैव अ पेन एंड पेपर विद यू ताकि नोट कर पाओ उस चीज को। ऑल्दो मैं लास्ट में उसका सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से मैंने केस स्टडी ग्रैब किया है। एंड ऑल्सो दिस इज एन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि जाके उस केस स्टडी को प्रॉपर फॉलो अप लेना, प्रॉपर डिस्कशन करना, बिकॉज इन टाइम कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़े लिमिटेशन में डिस्कस करेंगे उसको, बट फॉर द डिटेल, क्योंकि जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नहीं होगा, until and unless you don't have a real time knowledge and experience, theoretical चीजें कभी काम नहीं आएंगी। Yes, sir. Got it? Yes, Okay. sir. Yes, So, sir. Mandira, can we pause the recording?